student. Now our topic is double circulation. In double circulation, we will study that how blood is transported from body to the heart and heart to the lungs. What is the main reason of double circulation? To purify the blood in sense of gaseous exchange. Oxygen is the more useful gases for our body, which stuck to the blood and they transport to each and every cells of our body. Now, if there will be no double circulation, then there just one point I am saying, there are so many things. If there will be no, then what will happen? But one point I am saying, if there will be no double circulation, then the conduction of oxygenated and deoxygenated blood will be not occurred. Okay, now in lungs, what is the function of lungs? Lungs purify, means just purify the deoxygenated gases, means they exchange the deoxygenated gases. Deoxygenated means carbon dioxide rich gases, just they take out from the blood and they just excrete out during inhalation and exhalation process. Okay, now lungs, heart and body, these three systems we will study in this double circulation topic. Why it is double circulation, sir? First type of circulation, pulmonary circulation. Second is systematic circulation. So it forms double circulation. In pulmonary circulation, we will study the circulation between heart and lungs is called pulmonary circulation, and the circulation between body and heart is called systematic circulation. Now next, the blood which comes from upper part of our body, head, thorax and arms. Okay, this three area, if blood is coming from coming from head, thorax means this one, okay, chest cavity, thorax and arms area to heart, where it will comes in heart. Okay, if blood is coming from upper area, then it is known as the process by the path by which blood comes, that is called superior vena cava, and it is also known as anterior vena cava. From next, inferior or posterior vena cava, if the blood is coming from down of our heart. Down of our heart means heart is here in our body and down of that part. Okay, हार्ट के नीचे नीचे का जो भी पार्ट है, चाहे वो लेग्स हो जाए, चाहे वो एब्डोमेन हो जाए, कोई सा भी एरिया हो जाए, वो हमारा ब्लड जो आएगा वो इंफीरियर वेना कावा से या पोस्टीरियर पार्ट से आएगा. ओके, बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड जाता है तो सबसे पहला जो पाथ होता है, जो सबसे पहला वेसल्स होता है, उसका नाम होता है वेन. ये ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेस होता है, नॉट फुल्ली जीरो बट लेस. Blood comes from body to right auricle. Again, from right auricle to right ventricle, when blood goes, there is one valve present between right auricle and right ventricle, known as tricuspid valve. Okay, just keep in the mind. And here also you can see valve between the right auricle and right ventricle, also known as tricuspid valve or right atrioventricular valve. It is also known as right. How it is, sir? Right auricle है तो एट्रियो, वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकुलर. ओके, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. लिसन, राइट ऑरिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड को राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इसी वजह से. नेक्स्ट, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व से, और जो ट्राइकप्सिड होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, उसका मसल्स आप देखेंगे जब रियल हार्ट आप देखेंगे, 3D मॉडल उसका, रियल तो नहीं, रियल तो आप देख सकते हैं, गूगल कर लेंगे या फिर यूट्यूब पे अवेलेबल है. तो जब आप यहाँ पे मसल्स देखेंगे तो ये जो मसल्स फैला हुआ इस टाइप से, उस वाले मसल्स को बोलते हैं पैपिलरी मसल्स. ओके, ध्यान रखिएगा, जो कि ट्राइकप्सिड वाल्व को ओपनिंग क्लोज करने में हेल्प करता है. और वाल्व का मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. नेक्स्ट, व्हेन ब्लड कम्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, they just goes by pulmonary artery, which is carbon dioxide, which carry carbon dioxide rich blood and oxygen less blood. Okay, now again in lungs, what will happen in the lungs, sir? Just see, like that, cell is the smallest unit of our body. Same,
alveoli is the smallest unit of our lungs. How it will exchange the gases? Just see, this is alveoli. Okay, here vessels is coming, and if vessels is coming, then blood is also coming. Blood doesn't goes inside the lungs. Inside the lungs only air is present, but blood pass nearby to the alveoli. Why it is passing, sir? To exchange the gases. Okay, from if in alveoli there is oxygen concentration is more, but in our blood carbon dioxide concentration is more. Why blood has gone nearby to the alveoli? To exchange the gases. The deoxygenated part means carbon dioxide rich blood, they will give to alveoli, and alveoli give oxygenated blood to the alveoli. Sorry, oxygen gases to the blood. Carbon dioxide rich blood, they pass carbon dioxide to the alveoli, and oxygen will pass by alveoli to blood. Okay, and if carbon dioxide will pass to alveoli, जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को पास कर दिया जाता है, तो हम लोग जो एक्सपायरेशन करते हैं, बोले तो एक्सहेलेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग सांस लिए तो ये हमारा ऑक्सीजन अंदर गया, और जब सांस छोड़े तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, तो उससे इस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है. नेक्स्ट, ये प्रोसेस यहाँ होता है. तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज्यादा है तो हाई टू लो, और ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है तो हाई टू लो. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, लंग्स. फ्रॉम लंग्स व्हेन ब्लड comes outside, means nearby to the lungs, when blood comes outside, they just goes to the left auricle part, and the part by which the path by which blood comes from lungs to left auricle, that is known as pulmonary vein. Vein carry deoxygenated blood, but in pulmonary area from lung and heart, between lungs and heart, the pulmonary vein carry oxygenated blood. Okay, now from left auricle to left ventricle, blood goes by dicupsid, and again left ventricle the blood goes to the body, and the process by which, the path by which blood goes to the body, that is known as artery. Artery carry oxygenated blood, but pulmonary artery carry deoxygenated blood. They all are antagonistic to each other. Okay, now just come to the next, systematic. Again I am going to repeat, systematic circulation between body and heart circulation, between body and heart, and pulmonary means heart to body, lung circulation, heart and lung circulation between. Now next, brings deoxygenated, anterior vena cava brings deoxygenated blood from the upper region of the body. Yes, we have studied from head, chest, arms. Posterior vena cava brings blood from lower region of the body, include abdomen plus lungs, legs. Okay, right atrioventricular, just I have teach you that right atrioventricular valve. Just same here, left atrioventricular valve. The valve of dicupsid valve is also known as left atrioventricular valve. Okay, here that is also known as bicupsid valve, mittal valve. Valve between right ventricle and opening of pulmonary artery, means right ventricle and pulmonary artery, जो यहाँ से blood चला, जब ventricle वाला एरिया contract करेगा, just when ventricle contracts, then the blood comes out in pressure, and if blood comes out in pressure, here valve is here. So if some blood has come in this vessels area, then when ventricle contract, the blood will come out, but when ventricle relax, then blood again suck back. To prevent that sucking back, means वापस blood right ventricle के अंदर ना आ जाए, वापस बैक फ्लो ना हो जाए, वापस इस टाइप से फ्लो ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ वाल्व प्रेजेंट है कि एक बार जो ब्लड निकल गया सो निकल गया. ठीक है, इसीलिए अब आइए, तो यहाँ पे इस वाले पाथ में जो वाल्व प्रेजेंट है, उस वाल्व को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर. सी, वाल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व. इस वाले पल्मोनरी आर्टरी, इसीलिए पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व. वाल्व बिटवीन ओरिजिन ऑफ आयोटा, आयोटा मींस आर्टरी, वेना कावा मींस वेन, आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट सी, वाल्व बिटवीन ओरिजिन ऑफ आयोटा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के बीच जो वाल्व प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे. सर यही दोनों क्यों प्रेजेंट है, यहाँ क्यों नहीं प्रेजेंट?
क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है, इधर ओरिजिनेशन यहाँ से तो आ रहा है, तो इधर होने का संभावना है, पर यहाँ पे कोई अभी मतलब नहीं बनता हम लोग को स्टडी का। यहाँ पे तो ब्लड आना है, तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो निकल तो गया, लेकिन अगर वापस नहीं आ जाए, क्योंकि ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड ऊपर देगा, मतलब बोले तो वेसल्स के अंदर फ्लो कराएगा, इधर भी और इधर भी, और वापस से जब रिलैक्स करेगा तो वो सक होता है, तो वापस ना आ जाए, इसके वजह से यहाँ पे ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसको हम लोग आयोटिक सेमिलुनर वाल्व के नाम से जानते हैं। ये था हमारा डबल सर्कुलेशन। अगर आपसे कहेगा डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप सबसे पहले सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बीच में जो आप चीज पढ़े यहाँ पे और यहाँ पे, इसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी में ये वाला और ये वाला, इस दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद और इस दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद आप लिख देंगे दिस इज डबल सर्कुलेशन। एंड वन मोर थिंग, द सर्कुलेशन बिटवीन या अमोंग हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी ब्लड तो चाहिए भाई, तो वो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा पहुंचाया जाता है, और उसके बीच में सर्कुलेशन जो होता है उसको हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। सो we generally study double circulation, but three type of circulation is there, coronary circulation also included, and the part, this is deoxygenated part, these all are deoxygenated and this is oxygenated, both are separated by one muscles that is known as septum. Okay, this is separated by one muscles known as septum. So these all are double circulation. Okay, thank you.